So hello guys, welcome to the another episode of CRICTIK, and I'm your host Ankur Dua, back again with a very special guest Sandy Paaji to discuss about the first T20 I preview between India and West Indies. So Paaji, की हाल चाल? बहुत बढ़िया यार। क्रिकेट 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 बस मजा ही आया। एग्जैक्टली क्रिकेट सानू तो बस चाहिए यही है कि क्रिकेट दी गल्ला हो जाए एक बारी ते बस ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। सही गल यार जिदा आईपीएल ਦੇ ऑक्शन हो गई सब नु बस हो गया। हाँ जी। It's good man now with India playing again सब different franchise ਦੇ fan ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੜਾ player ਕਿੱਦਾਂ खेलूगा and indication good एग्जैक्टली होगा for the IPL। काफी सारे प्लेयर्स का ऑडिशन भी काफी अच्छा हुआ लाइक ओडीआई सीरीज में, जिनकी वजह से काफी हाई बिड भी लगी कई प्लेयर्स पे। तो एक ऑडिशन खत्म। डेफिनेटली हाँ ਜਿਹੜੇ इंटरनेशनल players यार काफी ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ हाँ जी। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੀਤਾ in the ODIs हाँ जी। ਫਿਰ 9 crore ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਜੇ जी। if it's before that you would think okay maybe 5.5 maybe 6 हाँ crore, but for a 9-10 crore player like Prasidh Krishna, but you know something he's doing really well या and you can see the performance improvement on the big stage because when they put the blue jersey of India on काफी pressure ਹੁੰਦਾ and it's एग्जैक्टली a good player that can wear that jersey and perform। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट T20 के बारे में। तो पहला मैच ईडन गार्डन्स में हो रहा है। लाइक ईडन गार्डन्स का माहौल लाइक बहुत अच्छा होता है देखने में, एंड लाइक क्या मजे आएंगे वहां पे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे वहां की पिच के बारे में। तो पिच देखा जाए तो पिच इज स्पिनर फ्रेंडली पिच। तो आपको क्या लगता है हमको कल कुलचा का जो जोड़ी है वो वापस देखने को मिलेगा? लाइक मेरा तो बहुत मन है उन दोनों को देखने का। सो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कल कुलचा खेलेंगे, बिकॉज कल का स्पिनिंग ट्रैक होने वाला है। तो काफी मजा आएगा अगर वो दोनों आ गए तो। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਚੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ਼ ਦਾ ਚਾਹਲ ਐਸ਼ या ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ਼ ਚਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ because I like ਕੁਲਦੀਪ। ਜੇ या ਕੁਲਦੀਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ if we didn't get Ash, I did say Kuldeep to come to RR। I think that would have been a good move because that player just needs confidence। जे उसकी confidence हो गया ना फिर that will be, but Chahal is like amazing, so I'm या very happy Rajasthan picked him up, but and RCB wasted the money on Hasaranga when they had Chahal there. Bought, but एग्जैक्टली। these teams see 6.8. It was, and to get Ash as well, So I think it could be Ash or Chahal, or it could be Chahal and बट ऐश Kuldeep। ऐश इज नॉट इन द स्क्वाड। तो इट्स कुलचा ओनली जो हम देख सकते हैं, बिकॉज अश्विन स्क्वाड में नहीं है। ठीक है। तो Okay, मतलब but मेरे हिसाब से तो कल Washington's also got out, so yeah, हाँ ही इज it आउट। could be Kulcha tomorrow. It could be Kulcha tomorrow. या Yeah. एग्जैक्टली वॉशी इज ऑल्सो आउट बिकॉज ही हैज अ लेफ्ट हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन। तो इसकी वजह से मतलब हमारे वॉशी आउट हैं। बट उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जब उन्होंने कम बैक करा था ओडीआई सीरीज में। तो अब हम बात करते हैं ड्यू फैक्टर के बारे में। जैसे हम अहमदाबाद में तो इतना ड्यू फैक्टर आया नहीं, कोई दोनों टीम को कोई ड्यू फैक्टर झेलना नहीं पड़ा। बट कोलकाता में कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आएगा। तो आई थिंक both the teams would like first decide to ball first and afterwards Oh, chase 100, करे। तो आपका क्या मानना है? 100%. Yeah, 100%. It suits India to chase as well. So, but again, bowling first when you know that there's a dew coming makes sense, and especially if you pick two spinners, where for Belakul you've got to really try to bat first. So it'll be interesting to see. And say West Indies, it'd be great to see some of their players as well. Rodman, Powell, Shepherd, and या these are players I haven't watched much, so see them, and then also Pollard, because Pollard या obviously Pollard at Mumbai Indians means that it's an interesting because they've lost quite a lot of players, Mumbai, to keep Pollard. एग्जैक्टली। तो एक चीज और भी है, अगर हम थोड़े से अब रिकॉर्ड्स की तरफ चले, पास्ट रिकॉर्ड्स की तरफ, तो इंडिया इज लीडिंग बाय 10-6। तो क्या लगता है इंडिया ये जो लीड अपनी और बढ़ाएगी क्या? वेस्ट इंडीज विल ट्राई टू कम क्लोज टू दिस लीड? I think जितना होना confidence या ODI India जितनी I think now it's time for India to step up and because really the preparations for the World Cup in Australia start. So all the players should be playing, for their places because this is a big thing. Biosecure bubble, so those that were in या the biosecure bubble for the ODIs, then they will have a good chance of showcasing their skills if they get selected. But I fancy India. I think India are really strong now, and I think the confidence of Gavin Royd back is massive.
to captain the team. You finally got the right man Yeah, captaining the team, and Belkul India are series together. It'll be a big confidence boost coming into the World Cup. yeah, But again, the IPL, as I said, the IPL will be the acid test. Some of these players, someone like Sanju Samson, if Deepak Hooda can get into the T20 team, yeah, why can't someone like Sanju Samson? So yeah. it will be interesting to see what happens there. And, I think India will win. एग्जैक्टली exactly, जैसे आपने कहा कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चालू हो रही है कल से, तो मतलब लाइक अब हर एक मैच इंपॉर्टेंट होगा. आई थिंक इंडिया नीड टू प्ले विद देयर बेस्ट स्क्वाड इन ईच एंड एवरी मैच, बिकॉज ये स्क्वाड अब हमको चाहिए ही चाहिए. बिकॉज अब हमने ये सीरीज नहीं जीतना, हमने T20 वर्ल्ड कप की तरफ देखना है कि हाँ हमने T20 वर्ल्ड कप जीत के आना है. तो लाइक इट वुड बी रियली टाइट सीरीज होगी, बिकॉज T20 जो पावर है वो वेस्ट इंडीज की टीम है. एंड वी नो इट, हमने देखा है कि 2 बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस रहे हैं वेस्ट इंडीज. तो उनको T20 में एक कंपटीशन देना, इट्स रियली टफ. एंड आई थिंक अगर इंडिया विल डू देयर बेस्ट, हम वेस्ट इंडीज को आराम से हरा सकते हैं. तो अब हम The problem in India है कि this is the thing I don't like about what India are doing. जो सीरीज जीत गए, जिन्हें चेयर सीरीज नहीं जीतते उन्हें चेयर अपनी फर्स्ट टीम खेलनी चाहिए. या And then soon as they won the test, the series, फिर जो squad players उन्हें सब या match देना चाहिए. Because then you will see if they can step up. Because the या problem when you have is when you have your first 11 playing every single match. Yes, it's good, but once you've won the series, you've got to allow other players to play. या And Rahul Dravid said that before he took the coaching there. If you come on the tour, you are guaranteed a game. So let's see if they या carry on doing that. If they do that, win the series, and then in the third game, get the players, and that will make them hungry. And if they get the taste of their thing, and then they know that they feel appreciated. World Cup 6 week, 4 week, 5 week program. Yeah, it's away in Australia. It's about the whole squad. या Like injury over, and you can't get another player to play in who hasn't played before. Where it's very imbalanced. So I think that's what India should be planning. He says, look, we want to use the full squad. If it's 2-2 and the last game is the decider, carry on playing your best team. But if या you've already won the series, it's better to give the players that are in the squad a chance. एग्जैक्टली पाजी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्लो दैट द टीम इंडिया गॉट. लाइक केएल, अक्षर एंड वॉशी, 3 ऑफ देम आर आउट. वॉशी और केएल को लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन हुआ है. तो लाइक सारे आउट हैं ये तीनों, और इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट्स आई है, वॉशी की जगह कुलदीप अंदर आए हैं, और केएल और अक्षर की जगह दीपक हुडा इज इन, एंड ऋतुराज गायकवाड इज इन. मैं कसम से कल ऋतुराज गायकवाड को देखना चाहता हूँ रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए, बिकॉज उनका Yeah. क्या सीजन रहा है विजय हजारी ट्रॉफी में. इट वॉज रियली प्लेजर टू सी हिज बैटिंग इनिंग्स. हमने सीएसके के लिए भी देखा, क्या मस्त खेलते हैं. इंडियन टीम के लिए अभी तक चांस नहीं मिला, लाइक उनकी किस्मत नहीं अच्छी थी, पहले कोविड हो गया जब उनको चांस मिलना था. बट नाउ आई वांट टू सी ऋतुराज गायकवाड टू ओपन विद रोहित शर्मा. तो आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड वो जगह डिजर्व करते हैं? 100% Rutraj Gaikwad needs to play because he was the star of the IPL. He's been playing well on the domestic circuit. The guy's confidence is on another level. Yeah. And you look at Deepak Hudan, you being Kings 11 Punjab Kings fan, the guy can't get 18, 19, 20, right? That's his average. And you've got now KL Rahul doesn't play. The next person in line is Gaikwad. And you take the figures from the IPL. It definitely is the player to what we want to see as the fans. We want to see Rutraj Gaikwad open with Rohit Sharma, and if he does well, फिर उसकी जगह काफी सिक्योर हो सकती है. एग्जैक्टली भाई, ट्रूली सेड, बिकॉज ही इज सच अ फिनोमिनल प्लेयर. हमने देखा है, सबने देखा है एक्चुअली. बिकॉज लाइक जो उनकी क्लास है ना, क्लास इज एट सम डिफरेंट लेवल. ही प्लेज द बेसिक क्रिकेटिंग शॉट्स, एंड उसी क्रिकेटिंग शॉट से ही स्कोर्स रन्स. तो इट्स रियली अमेजिंग टू सी. Rutraj Gaikwad एक चीज है, he has got gears. या जब प्ले को गियर हो फिर ना जगह एक्सेलरेट कर सकता है. और जिधर you look at Rajasthan Royals, we got really good batsmen, but we lose them before the power play. या But someone like Rutraj Gaikwad is a bit more streetwise and smart. He will say after six overs, I will be on this much, and then I have the shots in the bag to accelerate. And I think that's what problem with Punjab was in the IPL is they got Mayank and they both but at the same gear. And that's why the scoreboard isn't ticking. So if you got Rohit Sharma who will do the attacking,
and then you've got Ruturaj Gaikwad who will do the anchor. Yeah. Then once you've seen the power play through 6, then your 3, 4, 5 will come into the game, and that's where you win the matches. एग्जैक्टली पाजी, एग्जैक्टली. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्क्वाड. हम सारे प्लेयर्स के नाम देखते हैं कि कौन कौन कल खेलेगा, मतलब कोई खेलेगा नहीं, कौन कौन मतलब स्क्वाड में है. तो स्टार्टिंग विद यू हैव रोहित द कैप्टन, यू हैव देन ईशान किशन, यू हैव श्रेयस अय्यर, देन यू हैव विराट कोहली, देन यू हैव सूर्य कुमार यादव, यू हैव शार्दुल ठाकुर, यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव दीपक चाहर, you have Harshal Patel, you have Yuzi Chahal, you have Kuldeep Yadav, you have Venkatesh Iyer, Deepak Huda, Mohammad Siraj, Bhuvneshwar Kumar, Avesh Khan, Ruturaj Gaikwad and Ravi Bishnoi. Like Ravi Bishnoi लास्ट में मैंने नाम लिया, बट ही इज सच अ फिनोमिनल टैलेंट. अगर कल हमको यूजी चहल और रवि बिश्नोई की भी जोड़ी देखने को मिले, ये एक बहुत बड़ा मूव होगा इंडिया के लिए. बिकॉज जो रवि बिश्नोई ने भी करा है पहले अंडर 19 कैंप में, उसके बाद पंजाब किंग्स के लिए, इज रियली फिनोमिनल. उनका बहुत डेंजर गूगली आता है. तो आई थिंक दैट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अ बैट्समैन टू रीड. तो आई गेस अगर ये इन दोनों की भी जोड़ी होगी तो पाजी आपको कैसा लगेगा? Another guy that deserves a place in the Indian team is Ravi Bishnoi, because last year he was phenomenal, and again out and out spinner, very very good fielder as well. He can drop catches, but he's exceptional in the field as well. And I like his vibe on the pitch. He's got that feistiness, and I have no problems of having Ravi Bishnoi. Personally, tomorrow I think to win the first game, it's very important in the series to win the first game. So India should go with the best 11, and I think it's slightly out of the 11. But I want good Gaikwad in. But I think India will go for Kishan and Rohit opening the batting. Yeah, let's see, but hoping that ऋतुराज गायकवाड ओपन द इनिंग्स. सो हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर के बारे में और सूर्य कुमार यादव के बारे में. दे बोथ आर गिविंग अ गुड डेप्थ टू द मिडल ऑर्डर. लाइक दोनों आके, दोनों में से कोई एक प्लेयर एंकर करता है मिडल में इनिंग्स. वी हैव सीन सूर्य कुमार यादव इन द ओडीआई सीरीज, देन वी हैव आल्सो सीन श्रेयस अय्यर पार्टनरशिप विद ऋषभ पंत. तो दोनों ने आके अच्छा एंकर करा है इन द मिडल. सो आपके व्यूज की दोनों एक कैसे प्लेयर है, किस क्लास के प्लेयर है, और इन दोनों को हम T20 वर्ल्ड कप के लिए देख सकते हैं? Choice the choice a straight fight between Shreyas and Surya Kumar. I'm Surya Kumar Yadav fan, because again, sub shots here. Shreyas hasn't done it for me. When's the last time he scored a sparkling 50, 60, consistently? One good innings, 3 failures. One good innings, 3 failures. That's how we see Shreyas. Whereas I think Surya Kumar, he played really well in the ODIs. His confidence is now good. I think you stick to Surya Kumar Yadav. But again, in that 4 or 5 position, if KL Rahul comes into the squad, maybe he comes into that position, and you've got Ruturaj Gaikwad at the top. I wouldn't mind that either. So India have a lot of options, and which ones they will go for, the management will decide. But for me, Surya Kumar Yadav is up the pecking order above Shreyas Iyer. But I know a lot of Kolkata fans might not agree with that, but I'm telling you now, if I had a choice of the भाई इस टाइम पे कोलकाता चेन्नई सब छोड़ के we have to focus on team India, because that's our first priority. Nation is our priority. But that's the thing, it is what the fan base will think. You think, oh, Paaji is mad. But I say I don't support either Mumbai or Kolkata. I'm just saying, if you look at the form for that level, Paaji, I agree with you. The difference between Shreyas Iyer and Shreyas Gopal. Shreyas Gopal नहीं, सूर्य कुमार यादव. Surya Kumar Yadav, that is the difference. Exactly Paji, I agree with you, because मैं भी दोनों टीम में से किसी को सपोर्ट नहीं करता वैसे आईपीएल में, बट स्टिल अगर इंडियन टीम के लिए देखा जाए तो आई विल डेफिनेटली चूज सूर्य कुमार यादव. बिकॉज फर्स्ट गेम से आके, लाइक करियर की फर्स्ट बॉल खेलना फॉर टीम इंडिया, एंड ही हिट 6 टू जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा पहली बॉल पे. पाजी उसके लिए भी दम चाहिए, बंदे में ना जिगरा चाहिए. जोफ्रा आर्चर की बाउंसर लाइक अच्छे लेंथ पे थी, हार्ड लेंथ पे थी, और वहां से उन्होंने 6 मारा था. सो दैट वाज रियली ग्रेट, एंड उनकी क्लास बहुत अच्छी है. इतने पके हुए प्लेयर हैं, बहुत डोमेस्टिक खेला है, बहुत आईपीएल खेला है. सो ही नोज हाउ टू चेंज द गियर्स. और उनका जो एक स्वीप शॉट है, पक्का पकाया शॉट है, स्वीप हर किसी को, पेसर को भी छक्के मारते वो स्वीप लगा के. तो दैट्स रियली ग्रेट. ठीक है. And the difference with the two players being, I think Iyer is better when India lose quite a lot of early wickets. But if you bank on your top 4 to come in, then at 5, it's or 4 or 5, definitely the better player is Surya Kumar Yadav.
एग्जैक्टली पाजी, एग्जैक्टली। सो अब हम ऑलराउंडर्स की तरफ चले, तो ऑलराउंडर्स में आपको क्या लगता है कि कल हम इंडिया के लिए कौन खेल सकता है? यू हैव वेंकटेश अय्यर, यू हैव शार्दुल ठाकुर, दोनों अच्छी फॉर्म में है। वेंकटेश अय्यर भी काफी अच्छा खेलते हैं, बट इस टाइम पे जो शार्दुल ठाकुर है वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में, तो आई थिंक शार्दुल ठाकुर विल गेट अ प्लेस इन फ्रंट ऑफ वेंकटेश अय्यर। सो आपका क्या कहना है? बिकॉज एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा, शार्दुल ठाकुर को लेके आएंगे। तो योर ओपिनियन ऑन शार्दुल ठाकुर और Yeah. वेंकटेश अय्यर? Lord Thakur again. Lord Thakur wins that one because one is the batting. He's been batting really या well, and secondly the bowling. But I think I say again for Venkatesh Iyer, he hasn't done enough with the ball for me या for him to take the place of the. And Venkatesh Iyer can bat a bit higher up in the order, and I think that's where the difference is. Where Shardul या will be in his natural position of 6, 7, or 8, whichever. या भाई, एग्जैक्टली। सो अब हम चलते हैं वेस्ट इंडीज की स्क्वाड के बारे में, उनके देखते हैं कि उनकी स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर हैं। देन यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कैरन पोलार्ड जो टीम के कैप्टन है। देन यू हैव ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स है, रोमेरियो शेफर्ड है, निकोलस पूरन है, पोयल है, होल्डर है, फैबिन एलन है, ऑडियन स्मिथ है, अकिल हुसैन है, हेडन वॉल्श है, रोस्टन चेस, शाई होप, डैरन ब्रावो और डोमिनिक ड्रेक्स और शेल्डन कॉटरेल। इनकी 16 टीम की 16 प्लेयर्स की स्क्वाड है। तो इनकी स्क्वाड भी काफी अच्छी लग रही है, बिकॉज दे ऑल आर हार्ड हिटर्स। एंड वी नो अगर इनमें से कोई एक बैट्समैन भी टिक गया, सो ही विल टेक इंडियन बॉलर्स आउट ऑफ द बाउंड्री सीधा। लाइक वो छोटे मोटे छक्कों में डील नहीं करेंगे, दे डील इन बिग सिक्सेस देन। सो That's आपके, true. And कि उनको काफी कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया in the या T20 series to beat England या in in your home patch. I या think was a massive feeling for them. उनको confidence है कि but the problem is when any team comes and play in India, India will always going to be the favorites. And if Jack crowds, is there crowds tomorrow? Crowds सॉरी, again? Or is it behind closed doors or is it crowds? I, Crowds I in I Eden don't have Garden. idea for this. I don't really have idea for this, but I think कहीं 10-15% क्या पता crowd allowed कर दे। Rest Yeah. I don't have any idea for it. Yeah, as I said, the thing is when you play in India, the crowd is against you, then pressure is with you. Ex- So if it's played under closed doors, then yeah, then the difference isn't too much. Then it's just a cricket game. Yeah, But if the crowd get involved and the emotion gets involved, then you always favor India within India because Indian players can handle the pressure, whereas this type of pressure where the West Indies will have, whether they can handle it is a different thing. But Odin Smith, Rovaro Shepherd, King Brandon at King, the opening, Hope हो गए। I'm really, really happy with them. Yeah, But again, they have a good team. They have good spinners as well. So it's going to be an interesting thing. But I think if you look at the Team India, I honestly think they have enough in their squad to win on a consistent level. So, but India are the pay TM kings. So yeah. every pay TM trophy they take. एग्जैक्टली एग्जैक्टली पाजी। बिकॉज देखा जाए तो इनके पास भी लाइक काफी हार्ड हिटर्स है, जैसे स्टार्ट करे ब्रैंडम किंग से, फिर उसके बाद यू हैव द शाही होप, देन यू हैव पोलार्ड, रोमारियो शेफर्ड है, पोयल है, होल्डर है, फैबिन है, लाइक मतलब Odin Smith, एग्जैक्टली what a ऑडियंस number स्मिथ हो 10. गए। लाइक इनके 8-9 नंबर तक बैट्समैन ऐसे हैं जो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। सो इट्स रियली गुड। टफ मैच होगा फॉर श्योर, टफ मैच होगा, इजी मैच नहीं जीतेगी इंडिया। No, ठीक है, तो ये तो बात पक्की है कि टफ, बिकॉज दे हैव आल्सो टू गुड स्पिनर्स, लाइक दे हैव अकिल हुसैन एंड दे हैव हेडन वॉल्श। तो दोनों काफी अच्छे स्पिनर्स हैं और दे कैन इम्प्रेस। कोलकाता का ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, तो स्पिनर्स माइट प्ले अ मेजर रोल, बाउंड्रीज पे कैचेस आएंगे। तो अच्छा होने वाला है कल का but मैच you, एक। you look at the two spinners, you still say either if it's Bishnoi, Yadav या or Chahal, they are the better players. They are the या better players. So they, you would expect Indian spinners to. And again, the डोमिनेट। due factor is a due factor. So the team that is going to bat first, I think will win the game tomorrow. एग्जैक्टली पाजी, एग्जैक्टली। बिकॉज टॉस रोहित शर्मा करने जाएंगे, तो आई गेस ही हैज दैट लक फैक्टर। बहुत कम टॉस हारते हैं हमारे रोहित शर्मा। तो वी जस्ट होप कि कल रोहित शर्मा टॉस जीते एंड वी डिसाइड टू बॉल फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी कैन चेज इट इजिली। ठीक है, तो अब हम पाजी, अब मैं आपसे फाइनल थोड़ा सा प्रिडिक्शंस की तरफ आते हैं। सो मैं आपसे प्रिडिक्शन लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कल इंडिया के लिए एक की बॉलर, एक की बैट्समैन एंड सेम फॉर द वेस्ट इंडीज? Okay, for India, obviously I'm going to go with Rohit. I think ओके, Rohit's taking the captaincy in his stride and he will do it. And I'm going to go for Chahal.
Yeah, Okay. Yuzi Chahal, a new player, new superstar, social media king for Rajasthan. I'm going to Yeah. go for Yuzi Chahal. For West Indies, I'm going to go for Brandon King. I Okay. was really impressed with him there. And then maybe Odin Smith with the ball. I haven't seen him bowl, but I've Okay. been hearing some really good stuff with him. So maybe for you guys and Punjab Kings fans, maybe Odin's a bit of Odin Smith. But I really think India will win the toss, bat first, and will get a good score on the board, and they will win. Yeah. बात ही खत्म कर दी पाजी ने, क्या बस खत्म हो गया इतने कल। ठीक है। नाउ आई टेल, like I'll tell my predicted 11 to you, and you can tell me like it's good और कुछ चेंज होना चाहिए था इसमें। So my predicted 11 for tomorrow's match would be रोहित शर्मा ओपनिंग विद ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 पे विराट कोहली, 100%. ठीक है, देन यू हैव Yeah. श्रेयस अय्यर, देन यू हैव सूर्य कुमार यादव, देन यू हैव पंत, देन यू हैव वेंकटेश अय्यर, देन यू हैव शार्दुल ठाकुर, देन यू हैव दीपक चहर, यूजी एंड कुलदीप यादव। तो मेरे लिए ये कल की ये प्लेइंग 11 रहेगी फॉर इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज होने चाहिए थे? बिकॉज हमारे पास भूवी है, सिराज है, हुडा है, अवेश खान है, रवि बिश्नोई है, बट मैं इस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहूंगा। आपके कोई चेंज आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है? I would swap one of the bowlers, maybe Siraj for ओके। Deepak Chahar ओके। or Shardul. Yeah, either one of them, because I think the attack will be too similar. So you या need somebody who's a bit quicker, who can bounce the ball a bit more. या Otherwise, it's swinging conditions. If it's swinging conditions, then you have to bring Bhuvaneshwar in, because या Bhuvaneshwar under the swinging conditions is still better than Bhuvi, is still better than Deepak Chahar दीपक and चहर। Shardul Thakur if the ball swings. If the ball एग्जैक्टली। doesn't swing, then obviously that's why I said I probably would go for Siraj or ओके। Avesh Khan, because I would love to see हाँ। Avesh Khan make his debut as well. So I think a bit of a variance in the thingy, but I would agree with you 100%. That lineup is a very strong lineup. Maybe just the one pace change, I would say. एग्जैक्टली Maybe exactly. भाई yeah, यहाँ पे well, इंडिया टीम के साथ इस टाइम पे ये जो उनकी स्क्वाड है, ऐसे लगता है अगर किसी एक प्लेयर को भी ना खिलाओ तो इट्स लॉस फॉर टीम इंडिया, बिकॉज दे ऑल आर द मैच विनर्स, दे ऑल आर द चैंप्स। तो इंडियन टीम का इस टाइम पे ये सिचुएशन है। बट आई थिंक कल के मैच के हिसाब से, बिकॉज मैंने पढ़ा है कि इट्स अ स्पिनिंग विकेट, तो मेरे ख्याल से दो स्पिनर्स तो खिलाने ही पड़ेंगे, यूजी कुलदीप या फिर बिश्नोई अंदर आएंगे किसी एक की जगह पे। तो ये तो श्योर है। अब बाकी रहे दो पेसर्स का, तो एक आपको उसके साथ जाना पड़ेगा ऑलराउंडर के साथ, और दो पेसर्स ले सकते हैं। तो फॉर टू पेसर्स आई गो विद ठाकुर और सिराज, और अगर आप कह रहे हो जैसे अवेश खान भी कर सकते हैं टीम में, बट इस टाइम पे मेरे को ये बैलेंस लग रहा था, yeah. बिकॉज कोलकाता के ग्राउंड पे हमने देखा है स्विंग मिलता है स्टार्टिंग ओवर्स में। तो आई थिंक Yeah, the key problem is that okay, if it's just you and you lose the toss and you've got three spinners, या काफी problem हो सकती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, The दो problem स्पिनर्स in खेलेंगे, itself. दो ही स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे, ठीक है, Yeah. तीन नहीं खिला My सकते। biggest problem in Delhi, it's same as जब मैं IPL देख बात करूंगा, but I don't want to do it. Is like you look at Rajasthan, none of the batsmen bowl, and all the bowlers don't bat. So या again, you've got to find that for a T20 team, you've got to get at least one of your top bowlers. Say if Shreyas Iyer could bowl 2 overs of spin or 3 overs of spin, the balance of the team या suddenly looks completely different. So I think that's the big issue for tomorrow. It will be can you fit in the three bowlers? And therefore, then if you go that way, then Venkatesh Iyer has to play. या एग्जैक्टली बाजी, So I टोटली, understand your या टोटली एग्रीड। और अब मैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूँ, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी वेस्ट इंडीज की जो प्लेइंग 11 होगी वो होगी ब्रैंडन किंग विद शाई होप, देन यू हैव रोमारियो शेफर्ड, फिर पूरन पोलार्ड, पोयल, होल्डर, फैबियन, ओडियन स्मिथ, अखिल हुसैन एंड शेल्डन कॉटरेल। तो आई थिंक yeah. ये इनके लिए परफेक्ट है इस टाइम पे, बिकॉज इनके पास उसके अलावा और कोई ऐसा फास्ट बॉलर है नहीं। शेल्डन कॉटरेल है और स्पिनिंग भी हो गया आपके पास, 8-9 नंबर तक बैटिंग है। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट प्लेइंग 11 फॉर वेस्ट इंडीज। तो आप एग्री करते हो मेरे साथ, या आप भी कोई चेंज देखना चाहोगे वेस्ट इंडीज की टीम में? No, that seems fair enough to me. And again, I said the difference between the players in the West Indies in the West Indies team, काफी similar type of players here, and या their squad system, the balance होने दी एक रहती है. So even if one player goes out, the other player comes in, and the difference between the two players is not that big. So या I think that's where they have consistency of selection. And whereas India have too many options, काफी options, yeah, and there's more debate on the Indian team. We've got 30 players, 35 players. I would love to see Arshdeep play tomorrow. I would absolutely love if Arshdeep, because then we give us the left, अर्शदीप भी we नहीं give है us the स्क्वाड left में। arm. Yeah, yeah. In this squad, I say why can't he play?
He has the left arm. He has the left arm Exactly, capability, but and उनको I don't think, मतलब I don't know why Indian team isn't taking Arshdeep with them in the squad, because Arshdeep ने इतना impress करा है हमको with his left arm, और we are already lacking with the left arm bowler. तो I think अगर अर्शदीप को इंडियन टीम ग्रूम कर सके तो करे. काश कोई हमारी ऐसे बात सुन रहा हो, एंड like कोई बीसीसीआई का member and they bring Arshdeep to the squad and like he plays some yeah, games for Team India. that's what I'm saying. You know, if you have Arshdeep coming in, like Deepak Chahar, Shardul Thakur, and Venkatesh Iyer is the same bowler. You know, it's Yeah, the same bowler. There's nothing different. So the batsman can get themselves set and they can hit them out the park. yeah, Whereas if you have a left arm bowler coming through, it gives you the options. And you look at someone like Shaheen Shah Afridi from Pakistan. yeah. That's why he's so good. He's quick left armer, different angles for the batsman, and that's why he's so successful. Exactly, Paji. हम बहुत lack कर रहे हैं. I think Arshdeep can be that champ who can, just fulfill the place of the left arm seamer for Team India. So let's hope it happens someday. किसी सीरीज में लेके जाए and he gets a chance. And I think अगर उनको T20 के लिए groom करे future T20 World Cup के लिए, तो I think he can make it. तो अब Yeah, another good IPL, and then yeah, if he takes the same amounts of wickets as he's taken in the last three IPLs, he should be in the squad. And I say, exactly. I'm a Rajasthan Royals fan. Sakari got his chance. Why hasn't Arshdeep got his chance? That's the question I need to ask. I need to find the answer for. Exactly, Paji, exactly. तो now, yeah, here we end up with the video. पाजी, आप सबको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बताओ और सबको अपने राजस्थान फैंस फोरम के बारे में भी बताओ, ताकि लोग आपको फॉलो करें और आपका जो थोड़ा जर्नी वगैरह है उसको फॉलो करें. So we have two accounts. Mine is at Shin71. That's my personal account. Join that one. Or Rajasthan Royals Fansforum on Instagram. Very good. I think send me a message or send me a like or a follow on there, and then we will get you to join us. And we also have World Cricket Fans, which is a big worldwide cricket fans, and join us. We have live things during the IPL, live podcasts, and definitely a lot of cricket opportunities on there for you. And doesn't matter which team you support, we're happy to have you on board. Exactly. And also don't forget to subscribe my channel. आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे जाओ फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ, and also press the bell icon, because अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे you not get the regular updates. दबाओ और रेगुलर अपडेट्स लो. काफी पैक्ड सीजन है हमारा, बहुत सारा कंटेंट लाऊंगा, आई प्रॉमिस, एंड इट वुड बी अ क्वालिटी कंटेंट. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, दैट इज पंजाबी क्रिक गाय. वहां पे मैं बहुत अच्छा कंटेंट देता हूँ. बेसिकली आई एम अ पंजाब किंग्स फैन, तो वो उनके लिए जो पंजाब किंग्स से फैन है और जो मेरी जर्नी को एज अ फैन समझना चाहते हैं, मेरे को फॉलो करना चाहते हैं, दे कैन डू इट ऑन इंस्टाग्राम. तो इट्स पंजाबी क्रिक गाय. दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, शुड गो एंड डू फॉलो इट. And तो definitely because he's a brilliant thing. Ankur, मैं कह रहा नहीं तेरा तारीफ करता, but you have the energy, you have the passion, and I love talking to you, and thanks for always being such passionate about Punjab Kings. I'm Punjabi, although I support Rajasthan, and I love your passion for the game, and keep it up, brother. या पाजी, थैंक यू सो मच. ऐसी बस क्रिकेट के लिए तो हमेशा जज्बात हमारे जागे हुए हैं. तो पाजी जस्ट होप कि कल हमारा एक अच्छा गेम हो. इट माइट बी अ टफ गेम फॉर इंडिया, बट अगर इंडिया जीतेगा विल ऑल फील गुड एंड प्राउड फॉर टीम इंडिया. सो पाजी, हियर वी एंड अप विद द शो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. Jai Hind. जय हिंद.